So, in today's class, we were understanding about C++ language. Okay, in C++, in the last class, I told you that how to write the syntax. What is the C++ syntax, and then how to get the output. Okay, by cout. Cout is an object which will be used to get output on the screen. Okay, with the insertion operator, mean too smaller than symbols. Okay, so that moment I told you that we can use multiple cout objects. Okay, multiple like this cout multiple object to get the printout. Okay, so here slash n forward slash n used to get next line to get next line. In this next cout object, no any uh, forward slash n. Understood that? So when if you will not use forward slash n, so then what happened? I told you that same line, two sentences will be kept in same line. Okay. I told you that this is the web editor. Web editor means online. You can write the code instantly in the web editor, web page. You can change the code here and you can run the code and you can check back. सो मैंने बोला था कि ही बीच बीच में हिंदी में भी बता दूंगा हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि हिंदी बच्चे भी बहुत कुछ लोग शुरू का क्लासेस मेरा अटेंड किए थे। ठीक है, और उन लोग क्लासेस को इंग्लिश में मैं पढ़ाता हूँ इसलिए क्योंकि कंपनियां ज़्यादा इंग्लिश मांगती है। तो मैंने चाहा उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, बट बच्चे क्लास में आए थे चले गए थे, मेरे से बात नहीं किया उनको। मेरे से बात करना चाहिए सर, मुझे इंग्लिश इतना समझ में, तो हिंदी में भी पढ़ा देंगे बीच बीच में थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के। क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ, बट कंपनीज मांग रही इंग्लिश, आप इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सीख लो, क्लासेस छोड़ो मत। अच्छा, हिंदी फ्री क्लासेस है आपके लिए, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा ये फ्री क्लासेस। तो किसी का भी मदद हो सकता है, कोई गरीब बच्चा गांव के हैं, so no need to leave the classes if you don't understand the English, and you can communicate, discuss with me, sir, please sometime use in Hindi. Surely I will use Hindi. Okay, there is no any problem, but don't leave the classes. Okay. Okay, now, so I told you that what here, this is forward slash n is called namespace character to get a next line. So you are getting what, two lines here, na? So if I remove this one, so what happened here? See, so the two lines will be, two string will be in a single line. So that moment, so that you need to use forward slash. And I told you that this is the web stream web editor. Otherwise, you need to write the code IDE. You need to install like what you know IDE. That is what Visual VS Code. Okay, Code Blacks, such type of IDE for C and C++. Code Black supports for the both C, C++. VS Code, it supports for all the programs, Python, Java, C, C++. Okay, so JavaScript also. You download VS Code and run on your computer as a IDE. Okay, IDE is, I told you that to write the code. Okay, so here, see what happened. Why it is we are getting error? I told you that what, why it is getting error. So who will explain why we are getting error? Error is what? Try to understand. I told you that this is the string. Hello world is a string, and hello world started with the quotation marks, but it must be ended with the double quotation marks. Okay, always in Java and C, C++, string will be kept in double quotation marks. Okay, and it must be end with a colon, semicolon. Huh? Now it is okay. You will get two lines in single line. The result will be in single line.
It is taking somewhat time. So web editor means you are getting the result in single line. Web editor means what you know. Web editor, you can write the code on the spot instantly, and you can check the code. Okay, you can check the code. Okay, so here try to understand what is going on. This is happening. So if you write that space, you need to give a forward slash. You need to give forward slash here, but that forward slash n must be inside of the quotation marks. Otherwise, so if you two lines you are getting, and you can totally you remove this code from here, and you can write the code from, for your practice, you totally remove the code from here, you delete the code. Okay, you delete the total code. There is no any code here. Okay, you can write the code from starting. How you can practice, like what you know. First, hash, we need to write include what, you should have the idea. After hash, you need to include what library, which library you need to include. Input output stream, IO stream. For what purpose IO stream you need to include? I told you that this IO stream, include IO stream, it is a header file library to work with input output objects. Okay, if you will not include this IO stream, you will not be able to work with input output objects. अगर आपने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को नहीं लगाया, तो आपको आउटपुट इनपुट ये फंक्शंस होते हैं, उनके साथ आप काम नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, यूजिंग नेम स्पेस. Using namespace, there is no any namespace standard, it is a library. Colon is important, huh? Semicolon, huh? I told you that using namespace standard. So this standard is a library. It is used for what purpose? ये किस काम के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं? तो ये इस्तेमाल होता है कि नेम्स को आप ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करने के लिए इस लाइब्रेरी को लगाना जरूरी है. अगर इधर नहीं लगाओगे तो इसको आपने मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हो. अभी कहाँ मेन फंक्शन, इंट, हमने व्हाइट स्पेस दिया है. इधर व्हाइट स्पेस देने से क्या होता है, कंपाइलर इस लाइन को पढ़ता नहीं है, बट कोड अच्छा रीडेबिलिटी होगा, कोड रीडेबिलिटी के लिए, क्योंकि कोड अच्छा पढ़ने के लिए. नाउ इंट, नेक्स्ट मैंने बताया था इंट मेन फंक्शन. Main function always must be having parenthesis. Then I told you that flower brace. Okay, flower brace. Why flower brace? Inside the flower brace, whatever the instruction, जो भी instruction statements आप लिखोगे, उनको कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर पढ़ता है. मैंने बताया था ये इंटीजर है, मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन हमेशा ऐसे इधर सेव इसी नाम से लिखना, क्योंकि कंपाइलर इसी फंक्शन को ढूंढता है. उसके बाद इसके अंदर फ्लावर ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा, अभी क्या है, सी आउट, सी आउट. उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर. सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, use it to get output on the screen, to see the printout on the screen. So then whatever the statement, string you want to, how are you, hello world, how are you. Okay, now then afterward, terminate every sentence. I told you that every sentence is a statement, there is instruction that must be terminated with semicolon. हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, सेमीकोलन के साथ करना है, टर्मिनेट करना है. उसके बाद क्या लिखना है, रिटर्न जीरो. रिटर्न जीरो क्या है, मैंने बताया था रिटर्न जीरो क्या चीज है. रिटर्न जीरो होता है, ये बताता है कि नेक्स्ट क्लोज विथ फ्लावर ब्रेस.
सो रिटर्न जीरो ये बताता है कि मेन फंक्शन को नेक्स्ट कोई कोड नहीं है, मेन फंक्शन क्लोज हो गया, नेक्स्ट कोई देर इज नो एनी स्टेटमेंट, देर इज नो एनी कोड। रिटर्न जीरो मीन्स देर इज नो एनी कोड, मेन फंक्शन इज एंडेड। देन आपने ये क्लोजिंग ब्रेस लगाना है। अभी इसको रन करो, प्रैक्टिस। आपने पूरा कोड स्टार्टिंग से लिख, यू हैव रिटन द टोटल कोड फ्रॉम जीरो। So, okay, you can write the code for me. I told you that using namespace standard rather than writing here, इधर लिखने से बेहतर अगर आप चाहते हो अंदर मेन फंक्शन के अंदर लिखना चाहे तो सी आउट के साथ लिखो। कैसे लिख सकते हो आपने? मैंने बोला स्टैंड std टू कॉलम्स लिख लो। ओके, ये ऐसा रन करो अभी, क्या होगा? व्हाट विल यू गेट द रिजल्ट यू आर गेटिंग? वाई इधर भी है, सो इसको रिमूव करो। You remove this. Okay. So rather than this, you started to write here. Now you run the code. So then what? Let us see. Okay. So you can write one more same instruction std. Okay. You need to write std colon colon cout insertion operator. Okay. Then statement. Statement is what? Your string statement. Mm, string statement, anything you can write inside of quotes, double quotation marks। हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स में रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील? ओके, नाउ terminate, semicolon। So two cout statements we have written। So now what happened, whenever you run you will get single line, single line। So that moment I told you that what you need to keep, what? Single line, you need to get what, you need to keep what? Forward slash n here। If you run this you will get next line character, next line character। Okay, so like that you can remove the total code। टोटल कोड को आप निकालो इधर से, स्क्रैच से लिखना शुरू कर दो, पूरा कोड को इधर से हटाओ, हटा के फिर जीरो से आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइंस। इन न्यू लाइंस में, ये न्यू लाइंस के लिए आप न्यू लाइन इंसर्ट करना है तो स्लैश एंड कैरेक्टर को आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड की जगह पर आप स्टैंडर्ड मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो आप इस टाइप पे लिख सकते हैं। दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर लगा दो एंड स्लैश एंड कैरेक्टर टेक्स्ट के बाद लगाओ, इस टाइप कर सकते हैं। कैसा देख लो। दूसरा, ये स्ट्रिंग के बाद इंसर्शन ऑपरेटर को लगा दो और उसके अंदर ये लिख लो। कैसा? ओके, दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ और स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन को डबल कोटेशन के अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं, एक तरीका है। हियर नॉर्मल लिखा है, हियर देयर इज नो एनी इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, सेकंड इंसर्शन ऑपरेटर देन फॉरवर्ड स्लैश एन इन डबल कोटेशन मार्क्स, ये एक तरीका है नेक्स्ट स्पेस, स्पेस लेने के लिए। दूसरा, टू फॉरवर्ड स्लैश एन कैरेक्टर आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट ए ब्लैंक लाइन। सो अगर आप ब्लैंक लाइन, सपोज आपने दो फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दिया इंसर्शन ऑपरेटर के बाद,
So you'll get a blank line. Okay. Next क्या है? So दूसरा तरीका है, another way to insert a new line is end L manipulator. End L के साथ you can get a new line. ये इंसर्शन ऑपरेटर का एंड एल, तो इससे क्या मिलेगा? यू विल गेट ए न्यू लाइन. ओके. बोथ स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड एंड एल आर यूज्ड टू ब्रेक लाइंस. मींस break lines you will get a new line. Okay. Mostly this forward slash and used. इसके जगह पर आप ई एंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उससे क्या मिलेगा? लाइन को नेक्स्ट लाइन मिलेगा. so, थोड़ा सा खाली स्पेस, वाइट स्पेस मिले. सो सो व्हाट इज एग्जैक्ट फॉरवर्ड स्लैश एन? इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यू लाइन, अदरवाइज एस्केप सीक्वेंस. तो दूसरा नाम भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस. सो ये क्या करता है? कर्सर को उसका पोजीशन चेंज करके दूसरा बिगिनिंग, नेक्स्ट लाइन का बिगिनिंग में लेके आएगा. ये फॉरवर्ड स्लैश एन क्या करेगा? कर्सर को नेक्स्ट लाइन स्टार्टिंग में लेके आएगा स्क्रीन के ऊपर. सो दे उससे क्या होगा? नेक्स्ट लाइन, आपको नेक्स्ट लाइन मिलेगा. ठीक है. सो दिस स्लैश एन is called escape sequence, otherwise new line character. What it does, it will force your it brings your cursor to the next line starting on the screen. So examples of other valid escape sequences, we will see somewhat valid escape sequences कुछ. और दूसरा escape sequences को क्या क्या होता है, एक इस टाइप का भी डाल सकते हो, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस क्रिएट्स ए हॉरिजॉन्टल टैब. ओके. टू फॉरवर्ड स्लैशेस डाल दिया, इंसर्ट से बैक स्लैश कैरेक्टर. एक फॉरवर्ड स्लैश को डबल कोटेशन लिख दी, इंसर्ट से डबल कोट कैरेक्टर. ये इतना ये न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर है. न्यू लाइन सीक्वेंस, अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं? न्यू लाइन कैरेक्टर. ये सब बात प्रैक्टिस करेंगे हम लोग स्टार्टिंग से, फिर प्रैक्टिस करते हैं इसको. सो इधर क्या किया आपको? एक सिंगल सिंगल लाइन डाल दिया. सो सिंगल लाइन डालने से क्या बोला उसने? वो क्या है? सिंगल फॉरवर्ड स्लैश. ये कर सकते हैं टू, और एक इंसर्शन ऑपरेटर डाल के कर सकते हैं. तो इसके अंदर हम लोग अभी इंसर्शन ऑपरेटर डालेंगे. कैसे है देखते हैं. इस कोड को ऐसे भी कर सकता हूं मैं. एक तो है एंडल ऑपरेटर. कहाँ डालेगा एंडल ऑपरेटर को? ये रिमूव करो आप. ओके. आप इसके अंदर इस आ जाओ. इसके अंदर एंडल ऑपरेटर लगा सकते हो. एंडल ऑपरेटर से क्या होता है? बट इधर आप
ओके, सो नेक्स्ट क्या हुआ है, टू बैक स्लैश एन लिखा तो यू विल गेट ए ब्रेक. ओके, ब्रेक ऑफ लाइन. आई हैव एक्सप्लेन एंडल मैनिपुलेटर सेम है, इंसर्ट न्यू लाइन को लगाता है. ओके, दिस कॉल्ड एंडल मैनिपुलेटर, बट बिफोर आपको इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट, both backslash and n and ndl manipulator both will be used to break the lines. Okay, mostly this is used ना, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है. सो एक्चुअली बैकस्लैश एन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, अदरवाइज न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं. नया लाइन आपको चाहते हैं, अदर वैलिड एस्केप सीक्वेंसेस आप ये भी लगा सकते हैं. ये लगाया फॉर ए बैकस्लैश टी लगाया तो क्या होगा, तो बैकस्लैश टी लगा के देखते हैं क्या होता है. ओके, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी लगाते हैं इस जगह पर, क्या होता है, रन करो, check that what happened, it will give a horizontal tab. So we want to check that what happens if I use one tab. One tab is what, I told you that in the previous class, one tab means four spaces. You will get four spaces. Okay, this much of space you will get. So if you want to get horizontally, this forward backslash t will be used to get. Next is what, two, if you put two backslash, it insert a backslash character. So backslash character. Okay, if I use two backslashes, run this code, what happened? Try to see what happened here. So if you want to get this backslash, a character, if you want to get a backslash character, you need to use two backslashes inside of double quotation marks. डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपको टू बैक स्लैश लिखोगे तो एक बैक स्लैश कैरेक्टर आपको दिखेगा इधर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैब चाहिए तो बैक स्लैश टी. नेक्स्ट, इंसर्ट से डबल कोट कैरेक्टर. अगर आपने डबल कोट कैरेक्टर को लेना चाहते हो, आप कोड के इधर क्या लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बैक स्लैश के ऊपर एक कोड डाल दो, सो यू विल गेट ए बैक स्लैश कैरेक्टर, सॉरी कोट इन योर टेक्स्ट. टेक्स्ट के अंदर आपको एक कोट मिलेगा, टेक्स्ट के ऊपर एक कोट, डबल कोटेशन. ओके, सो ये दिस टोटल क्लास टुडे, आज जो भी क्लास है सी प्लस प्लस न्यू लाइन के बारे में, कैसे कैसे न्यू लाइन लगाते हैं, ये पूरा क्लास खत्म. नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास इसके अंदर अभी पढ़ते हैं. ओके, इधर हम लोग पढ़ रहे थे, इस जगह पर क्या हो रहा था, इस जगह पर हो रहा था कि ये कुछ नहीं है, तो रीजन क्या है, ये कोड नजदीक होना चाहिए उसका. ओके, ये है